Assalamu alaikum class. Today I am going to discuss the reproduction and development and the metamorphosis of the amphibians. Okay, amphibians are dioecious. Dioecious means both sexes are separate. It's mean male and female are the separate individuals. Now, what is the location of the ovaries and testes? They are located near the dorsal body wall. बॉडी की डॉर्सल साइड पे ओवरीज और टेस्टिस आपको मिलेंगे. फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल है, बॉडी से बाहर होती है, with the exception of caecilians and some salamanders. And because the developing eggs lack any resistant covering, development is tied to moist habitat, usually water. अच्छा, अब आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं एम्फीबियंस, ये ज़्यादातर वाटर के नज़दीक या वाटरी इन्वायरमेंट में करते हैं. क्यों? बिकॉज दे लैक एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंट कवरिंग, so it is necessary for them to reproduce near the water, otherwise the problem of desiccation will face. A few neurons have terrestrial nests that are kept moist by being enveloped in the foam or by being located near the water and subjected to flooding. अच्छा, अब कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिन्होंने नेस्ट बनाए हुए होते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में. अब उन्हें मॉइस्ट कैसे रखा जाता है? या तो फोम में या कहीं से इकट्ठी करके वहाँ उनको मॉइस्ट रखेंगे, या फिर इनके जो नेस्ट होते हैं वो बिल्कुल पानी के करीब होते हैं और पानी वहाँ से फ्लडिंग वगैरह होती रहती है. In a few species, larval stages are passed in the egg membranes. कुछ स्पीशीज़ के अंदर लार्वल जो स्टेजेस हैं वो एग मेम्ब्रेन्स के अंदर ही मतलब बन जाएंगे लार्वी. एंड इमेच्योर हैच इनटू द अडल्ट लाइक बॉडी. और जो हैचलिंग होता है वो उसकी बॉडी बिल्कुल अडल्ट जैसी होती है, लेकिन साइज़ छोटा होता है अडल्ट से. Only about 10% of all salamanders have external fertilization. This is important from examination point of view. All other produces spermatophore, and the fertilization is the internal. Spermatophore is the packet in which sperms are stored. Eggs may be deposited in the soil or water or retained in the oviduct during the development. All caecilians have internal fertilization and internal development. This is also important from objective point of view. All caecilians have internal fertilization, while 10% salamanders have internal fertilization. Remaining animals have external fertilization. Amphibian development. Amphibian development physiologists have studied extensively, which usually include the larval stages called the tadpoles. This is important that the larvae of the amphibians is known as tadpoles. Amphibian tadpoles often differ from the adults in the mode of the respiration, form of locomotion, and the diet. These differences reduce competition between the adults and the larvae. I already told you these differences, why these are necessary to reduce the competition between the adults and the larvae. Interaction between between internal stimulus are the hormones, or you can say the endocrine system controls, and extrinsic. The word extrinsic is used for external factors. Now, what are the external factors? External factors include temperature, moisture, humidity, etc. Determine the timing of the reproductive activities in the temperate regions. Temperate regions are those regions which have normal environmental conditions. Temperature, humidity, moisture, these are not at their peak. Temperature seems to be most important environmental factor that induce physiological changes associated with the breeding, and breeding periods are seasonal, occurring in the spring and summer. So in the temperate region, breeding occur in spring and summer, and temperature is an important stimulus which induce breeding in the amphibians of the temperate region. In tropical regions, they have mostly harsh environmental conditions. Amphibians
Breeding correlate with the rainy seasons. If the water is available to sufficiently available to maintain the eggs, then they reproduce. Courtship behavior. Now, what is courtship? Actually, it is a time period of the romance before getting married. Courtship is the time period of the romance before getting married. This behavior help to individual locate during breeding sites. Actually, during the courtship, animals locate breeding sites and they also identify potential mates. It also prepare animals for reproduction and ensure that eggs are fertilized and deposited in the locations that promote successful development. Definitely, when animal reproduces, animal need a proper site for its nest, proper condition, environmental conditions for the maintenance of its eggs, or you can say the zygotes, sperms, etc. So the next need is to prevent their eggs or prevent their young ones from the predators. So there will be a more chance of successful development. Salamanders rely means depend primarily on the olfactory and visual clues in the courtship and the mating. Salamanders सूंघ के और देख के अपने मेट को आइडेंटिफाई करते हैं. Whereas male vocalization and tactile cues are important for neurons. Neurons में males आवाज़ें निकालते हैं. अक्सर गर्मियों में रात को सुनी होंगी. Vocalization ऊंची आवाज़ें निकालते हैं. Many species congregate कहते हैं इकट्ठे हो जाना in one location during the time of intense breeding activity. Definitely एक जगह इकट्ठे होंगे तो breeding ज़्यादा animals आपस में breed कर सकते हैं. Male vocalizations are species specific and function in initial attraction and contact between the mates. This is most important from objective point of view. Male vocalizations जो है वो species specific होती हैं और ये important होती हैं, interact करवाती हैं mates के दरमियान. After that tactile cues are more important. उसके बाद touch के cues ये बहुत important होते हैं. The male grasp का मतलब होता है female. Grasp का मतलब होता है पकड़ना. The female his fold them around his waist so that they are oriented in the same direction. Male grasp करेगा female को उसकी waist के गिर्द ताकि दोनों की same direction रहे. और male dorsal होता है यानी ऊपर होता है female के. This positioning is called amplexus. Amplexus is important from examination point of view, and this lasts almost for 1 to 24 hours, but may last for days in some species. During amplexus, the male releases sperm as the female releases eggs. अब एम्प्लेक्सिस में क्या होता है कि जैसे फीमेल एग रिलीज करेगी, मेल उसी वक्त स्पर्म रिलीज कर देता है ताकि फर्टिलाइजेशन चांस इंक्रीज हो. अच्छा, कुछ न्यूरॉन्स में कुछ मेल्स जो हैं वो अपने डिजिट्स या मतलब हाथों पैरों की जो उंगलियां ना उन्हें बढ़ा लेते हैं. स्क्यूज का मतलब होता है निचोड़ना फीमेल से ताकि वो एग्स निचोड़ सके. Little is known about Sicilian breeding behavior. Males have an intermittent organ, that is the modification of the caulicle wall, and fertilization is internal. अब आप ये देखेंगे एम्प्लेक्सिस की कंडीशन है. इसमें ये मेल है, इसने फीमेल को उसकी बेस के गिर्द ग्रास्प करके रखा हुआ है. तो दोनों की पोजीशन सेम है. मेल इज डॉर्सल टू द फीमेल. अब जैसे ही फीमेल एग रिलीज करेगी, मेल रिलीजेस स्पर्म्स एंड द fertilization occur. Okay, this is the behavior of the frog known as the hyla cynaria. This behavior is this behavior is to reduce the surface area. ठीक है, डे टाइम पोस्चर है, स्लीपिंग पोस्चर कहते हैं, बिल्कुल इकट्ठे पास होता है. साइक्लोरेना ब्लैकटीसेफलिया, ये दूसरा फ्रॉग है, इसका साइंटिफिक नेम है. अब ये कहाँ रहता है? ऑस्ट्रेलिया में रहता है और सैंडी बरोज में रहता है. ये अपने गिर्द कोकून बना लेता है जब हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं. अब जब उसे बाहर निकलेगा, अभी ये ब्रीडिंग सीजन में ये वोकलाइज कर रहा है, ये अपना वोकल कॉर्ड्स को बढ़ा लेता है और ये इसके ना गले के नीचे अब ये बड़ा सा पार्सल नज़र आ रहा है. इससे इसकी आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है, ये बढ़ जाती है ताकि फीमेल से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो. दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक. थैंक यू.